Good evening, friends. Namaskar, dosto. I am Dr. Sanjay Kalra, your friendly endocrinologist, and you are watching Dr. KK's Med Talks, Mondays with Dr. Sanjay Kalra. आज के हमारे नॉन स्टॉप शो का 631वां 631st एपिसोड है. Let's have the headlines for today. China में हलबली. China is sending its military and doctors to Shanghai to test the entire population of 26 million people for COVID-19. China has also found a new virus subtype as its daily cases of COVID-19 exceed 13,000. हमारे यहाँ इंडिया में our daily COVID-19 cases have dropped to below 1,000 after 715 days, nearly 2 साल के बाद. And we have 1,316 recoveries and 13 deaths within the last 24 hours. So COVID अभी तक पूरी तरह गया नहीं है तो सही, but बहुत कम है, but अभी तक गया नहीं है. We have to be careful. And because of that, a government panel has recommended that Covax vaccine should be included in the national COVID vaccine drive for all children aged 12 and above. The World Health Organization, however, has suspended Covaxin supply for United Nations procurement, citing GMP, good manufacturing practice, deficiencies at the Bharat Biotech facilities. So ups and downs, yahi zindagi ka safar hai. And while we continue in this journey of life, let's move on to a new topic. Let's see what our topic is for today. Foot care and footwear. अब इस टॉपिक के लिए, because if you have happy feet, you will be happy yourself. If you have healthy feet, you will be healthy. And if you have fit feet, you will be fit yourself. इसके लिए हमें ऐसा गेस्ट चाहिए जिसके दोनों पैर जमीन पे हों. The speaker should be grounded. यदि मगर ये दोनों पैर जमीन पे हों, मगर ये आसमान को छुएं, आसमान की ऊंचाई को छुएं. और ऐसे हमारे गेस्ट हैं डॉक्टर संदीप सूरी. वार्म वेलकम डॉक्टर सूरी. Thank you. So Dr. Sandeep Suri has been with us earlier. A warm welcome again, Dr. Suri. He is a senior diabetologist at the Advanced Diabetes and Critical Care Center in Holy Health Hospital in Hisar, Haryana. 2.5 decades of experience, vast knowledge of clinical skills, advocacy, public awareness, and also research. And he is the president of the Indian Podiatry Society, Haryana chapter. So, Dr. Suri, अभी हमने बात की कि दोनों पैर जमीन पे हैं और उसके साथ आप आसमान की ऊंचाइयों को छूते हैं. So, एक नॉटी क्वेश्चन, सवाल यह है, इज दिस करेक्ट फॉर यू? बट एक उसके बाद इस सवाल को छोड़ भी देते हैं. एक क्वेश्चन यह है फॉर एवरीबडी, एवरी लेडी, एवरी जेंटलमैन, हर महिला, हर पुरुष के लिए, हर बच्चे के लिए. इज इट करेक्ट कि अगर आप ग्राउंडेड हैं, आपके पैर सही हैं, तो ही आप आसमान की ऊंचाइयों को छू सकते हैं? Yes, absolutely true. Actually, feet are very, very important. If you see how much we take care of our feet, it's just negligible. In 24 hours, we see our face at least 3, 4, 5 times, but never look at the feet. Only at the time of bathing, we just have very fast time, shower liya और जल्दी जल्दी भागते हैं, dry किया, feet are बस shoes on or slippers on, and feet are just forgotten. But these are the most important part, most important anatomical marvel which we have. We stand on our feet. It's a weight bearing. We stabilize on our feet. Our stance depends upon our feet. Our gait depend upon our feet. What type of posture we are going to have. Our locomotion depend upon our feet. Then if you can compare the whole profession of a dancer or of a runner or a jumper or an athlete or a worker or a rickshaw puller, it all depends upon the integrity of our feet. So it's a very, very essential. कहते हैं ना कि जिसके पांव आगे चलते हैं तो उसी से उसके भाग्य भी आगे चलता है. तो सेम बात है. फीट आर वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट. जैसे कहते हैं यहाँ मस्तिष्क में यहाँ लिखी होती हैं हमारी रेखाएं जो हमारा भाग्य बताती हैं, वही हमारे पांव में भी रिप्रेजेंट करती हैं. So this is what I want to say, that it is very, very important to take care of our feet. We should have healthy feet, and also important, our footwear should be appropriate. तो पैरों की पे जितना फोकस किया जाए उतना कम है. एंड
आपको सुनने के लिए डॉक्टर संदीप करनाल से मिस्टर संजय नारंग है, इंडस्ट्री लीडर फ्रॉम करनाल, मिस्टर सनी ग्रोवर एंड डॉक्टर आर एस चौधरी सर। ऑल्सो संजीव पुरी जी भी आपको गुड इवनिंग कर रही हैं, शाची बत्रा जी हेलो कर रही हैं, एंड अमन सचदेवा भी नमस्कार कर रहे हैं, एंड केदार जोशी जी सर जो हमारे सीनियर हैं ये भी कह रहे हैं। केदार जोशी सर की तरफ से एक सवाल पूछता हूँ। हमारी परंपरा है कि बड़े के बुजुर्ग के पांव छूने हैं, इसका मेडिकल महत्व क्या है पांव छूने का? व्हाट आर द एडवांटेजेस दैट एक्रू टू द पर्सन हुज फीट आर बीइंग टच्ड? व्हाट आर द सी एडवांटेजेस दैट अकर फॉर द पर्सन हु इज टचिंग फीट? दोनों के लिए फायदा होता है, दोनों के लिए। एक तो जो सबसे ज्यादा उसको फायदा होता है जो पैरों को हाथ लगाता है। वन मोस्ट इंपॉर्टेंट कि आप अपनी ईगो का त्याग करते हो और आप समर्पण करते हो। दूसरा, जब आप पाँव को हाथ लगाते हो तो इट इज नॉट टू बी टच फ्रॉम द डॉर्सम, इट शुड बी टच फ्रॉम द प्लांटर surface. It should be the touch from the plantar surface, that your palm of your hands touch the plantar surface of the feet of the person who is sitting. So this is a soul connection. This is a soul connection कि आप कनेक्ट हो जाते हो उनसे, और जितनी भी ब्लेसिंग्स आपको मिलती हैं, जो भी उसकी मन की अच्छी से अच्छी भावनाएं हैं, वो डायरेक्ट ट्रांसमिट आपके अंदर हो जाती है। इट्स ए सॉर्ट ऑफ ब्लूटूथ। सो सो दिस इज, और हम लोग बहुत लकी हैं कि हमारे हिस्ट्री में आप देखो, सुदामा के पांव धोए श्री कृष्ण ने, और खड़ाऊं जो है भरत ने राम राम की श्री राम की खड़ाऊं को रखा, और उन्हीं को ही आप सिंहासन पे रखते हो, उन्हीं को ही समझते हो कि आप ये राजा हैं, और तब तक जब तक वो वापस नहीं आते आप उनकी पूजा करते हो। तो बहुत बहुत उदाहरण है हमारे हिस्ट्री में, आप हमारे रिलीजन में, और इंडिया में तो ये एक तरह का इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट रिचुअल है। और ऑल्सो नाउ इट इज यंग पीपल, दे डोंट बेंड लाइक दैट, so that is also, that indicates they are much more stiffer at the lumbar spine. So now they are not bending that much, and they are just saying hi, or somewhat like hi dude, or something like that. So these things have changed in front of our eyes, just, and we feel, but still this is very very important thing, that take giving respect and getting respect. तो राधे श्याम जी भी ऐड कर रहे हैं, यू गेट पॉजिटिव एनर्जी व्हेन यू टच समवन्स फीट, Yes. व्हेन यू टच Yeah. एन एल्डर्स फीट। एंड केदार जोशी जी सर, आप तो डॉक्टर सूरी की तारीफ कर रहे हैं कि उन्होंने बहुत सही कहा, मगर मैं अपनी और संदीप की ओर से आपके पांव छूता हूँ। वी थैंक यू फॉर ऑल योर Yeah. ब्लेसिंग, एंड सब लोग जो हमारे साथ लॉक्ड इन है हमसे बड़े, संदीप और मैं दोनों आपके पांव छू रहे हैं सबके। सो दैट Yes. इज द एडवांटेज। एक तो सोशल एडवांटेज हुआ, इमोशनल एडवांटेज हुआ, और आपने फिजिकल एडवांटेज की भी बात की। अगर आप लगातार पाँव छूते रहें तो आपकी पीठ की भी एक्सरसाइज होती है। Yes. Yeah. और मैं भी रियलाइज करता हूँ, मेरा भतीजा है पावन साहनी, वो सच्चे दिल से पाँव छूता है। सो यू कैन गेट द फीलिंग, यू नो, कि कौन सच्चे दिल से Yes. पाँव छू रहा है और कौन नकली दिल से Yes. छू रहा है। Yeah. व्हाट अबाउट द एडवांटेजेस टू द पर्सन हुज फीट आर बीइंग टच्ड? आप अपनी ओपीडी में हर मरीज के पाँव देखते हैं क्या? तृप्ति जी एंड दीप्ति ओबराय जी ये सब ये सवाल पूछ रहे हैं आपसे। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, और सच बताएं आपको तो जस्ट नेग्लिजिबल वी लुक एट द फीट, वी डोंट लुक एट द फीट। और ये इंटरनेशनल रीसेंट डाटा है, इतना सारी एजुकेशन के ऊपर, कि डायबिटिक पेशेंट पीपल विद डायबिटीज, दे उनके इतने वनरेबल फीट होते हुए भी हम लोग सिर्फ 15 से 17% डायबिटिक पेशेंट के फीट को चेक करते हैं। अदरवाइज 85 to 90% the people with diabetes, they don't have their feet examined throughout their lifetime until unless they develop some ulcer or something. ये तो चलो फिजिशियंस की बात करते हैं। एक सर्जन्स का बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है, इंडियन सर्जन्स का, कि एम्पुटेशन के बाद 58% पता लगा कि सिर्फ 58% लोगों के ही वेसल चेक हुए थे, बाकियों के वेसल चेक हुए ही नहीं। ब्लड सर्कुलेशन ओनली 7% लोगों के हम न्यूरोपैथी चेक करते हैं बिफोर एम्पुटेशन। दैट मीन्स अराउंड 95-93% पेशेंट्स की न्यूरोपैथी चेक ही नहीं होती, और फीट उनके, और समथिंग हैज हैपेंड एंड यू गो फॉर एम्पुटेशन। So I think this requires lot of education, both at the level of patients and also at the level of healthcare physician. We should take now an important step, that is the motto of our Indian Podiatry Association,
that we say that I prevent amputation. It is not Indian Podiatry Association. It is I prevent amputation, and we have taken an oath that every year we are going to prevent at least one amputation. Each and every member of IPA should prevent at least one amputation every year. ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है. सो डॉक्टर संदीप, हाउ डू वी प्रिवेंट एम्पुटेशन? डू वी प्रिवेंट इट इन द ओपीडी इन द हॉस्पिटल, और डू वी प्रिवेंट इट एट होम? तो एक क्वेश्चन सबकी तरफ से आ रहा है, मैं अपने पैर कैसे देखूं, मैं क्या करूं? डॉक्टर रमेशपाल सिंह पवार सर भी हैं, सर सीनियर सिटीजन. सर, डॉक्टर पवार सर, डॉक्टर संदीप और मेरी तरफ से हम आपके पाँव छू रहे हैं आज, तो प्लीज एक्सेप्ट. तो हाउ डू वी एग्जामिन आवर फीट एट होम? स्टेप वाइज हमें बता दें भी हम क्या करें, कैसे करें. देखिए, पहले तो इम्पोर्टेंट समझनी है कि पैरों की हमें चेक करना क्यों चाहिए. जब तक आपको ये समझ नहीं आएगा तो आप ये नहीं समझोगे कि पैर चेक करने क्यों. तो कैसे करें? करने से पहले ये समझना है कि करने क्यों चाहिए. देखिए, डायबिटिक पेरिफेरल न्यूरोपैथी एक एंटिटी होती है जिसमें पैर सुन्न हो जाते हैं. आपकी भाषा में बताएं कि पैर बिल्कुल सुन्न हो जाते हैं. कई तरह की कंप्लेंट्स होती हैं, टिंगलिंग, नंबनेस, पैरासीजियास, पिन सेंसेशन. उसको ऐसे लगता है जैसे कीड़ियां चल रही पैरों में, सुन, और ऐसे लगता है पैर मेरे जो है वो कॉटन के ऊपर है, या आइस लग गई पैरों को, या बिजलियां लगती हैं, या करंट लाइक शॉक लगते हैं. ये सेंसेशन जो होती हैं ये पेरिफेरल न्यूरोपैथी बताती है. लेकिन ये सिर्फ 40% केसेस में होती हैं. 60% केसेस के अंदर दिस इज एब्सोल्युटली एसिम्प्टोमेटिक पेरिफेरल न्यूरोपैथी. तो पेरिफेरल न्यूरोपैथी टाइप 2 डायबिटीज, जो यूजुअली कॉमन टाइप ऑफ वैरायटी डायबिटीज होती है, उसमें ये 20 to 30% तो एट द टाइम ऑफ डायग्नोसिस ही होती है. राइट, फ्रॉम द even from the pre-diabetes you can have this diabetic peripheral neuropathy. तो एक तो आपकी नर्व की सेंसेशन खत्म हो गई या वो बहुत कम हो गई. जैसे भी आप नर्व की सेंसेशन, पेन इज वेरी इंपॉर्टेंट गिफ्ट. अगर आप चल रहे हो, अगर आप नॉर्मल आपकी सेंसेशन है, आप चलते हैं, तो आपको पता लगेगा एक छोटा सा कंकड़ आपके पैर में आ जाए या आपके जूते के अंदर चला जाए, तो इमीडिएटली यू विल स्टॉप एंड यू विल रिमूव योर शूज एंड थ्रो आउट दैट कंकर और दैट स्टोन फ्रॉम आउट और द फॉरेन बॉडी फ्रॉम योर शू, एंड देन यू वियर बैक एंड देन यू वॉक अहेड. तो एक स्टेप भी आप नहीं चलते. लेकिन डायबिटीज का पेशेंट उस कंकड़ पत्थर के साथ लगातार चलता रहता है. हमारे पास कई बार पेशेंट आते हैं जिसमें द नेल हैज गॉन थ्रू द आउटसोल and from that gone inside the feet and it is stucking there and we have to remove that chappal or that shoes along with that nail. तो ऐसा बहुत बार होता है कि उनको उस घाव के ऊपर, उस सुई के ऊपर, उस नीडल के ऊपर वो चलते रहते हैं लेकिन उनको पता ही नहीं लगता. तो इसका मतलब डायबिटिक पेरिफेरल न्यूरोपैथी एक ऐसी कंडीशन है जो आपको कभी भी ब्लफ कर सकती है और ये इस तरह से आपको डैमेज कर सकती है कि आपके पैर बिल्कुल खत्म हो सकते हैं, एम्पुटेशन में भी जा सकते हैं. तो ये बहुत कॉमन है. इसके साथ इसकी ब्लड सप्लाई भी कम हो जाती है. और फिर अगर आपके पैर में कोई डिफॉर्मिटी है, जैसे कई बार जो अंगूठा बड़ा है वो साइड में हो गया, या समटाइम देयर आर आपकी जो कनकेविटी है दैट इज ऑन हायर साइड, और आर्च इज ऑन हायर साइड, और एंकल इज इवर्टेड, और सुपिनेशन और प्रोनेशन में एंकल चला गया है, और क्लॉटो हेमाटोज हैं, बनियंस बनते हैं आपको, या आपका सिटिंग आपकी ऐसी है, चौकड़ी मार के बैठते हैं, जैसे टेलर्स वगैरह होते हैं चौकड़ी मार के बैठते हैं, तो आपको ये डिफॉर्मिटी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. तो न्यूरोपैथी, वेस्कुलोपैथी एंड डिफॉर्मिटी, ऑल दीज थ्री can lead to problem, can lead to callus formation, can lead to ulceration, and can lead to this ulceration can infection can be there, and then you can have osteomyelitis and amputation. So if you want to prevent this catastrophic event, if you want to prevent, you have to take care, you have to check your feet daily. तो कैसे देखा जाए? बेस्ट इज टू हैव ए मिरर. आपको आगे झुक के पाँव को देखना इम्पॉसिबल है, मोड़ के देखना भी इम्पॉसिबल है, और अगर आप थोड़े से भी ओबीस हैं तो आपके लिए बहुत मुश्किल है, और एल्डरली हैं तो उनके लिए और मुश्किल है. बेस्ट टू हैव ए मिरर जिसको आप पाँव के आगे रखिए, और मिरर से आप उसकी शेडो बड़े आराम से उसकी मिरर इमेज देख सकते हैं. क्या देखना है? आपको 3 जगह देखनी है. आपको प्लांटर सरफेस देखना है, आपको डॉर्सल सरफेस देखना है, और इन बिटवीन द वेब स्पेस देखना है, बस, और कुछ नहीं करना. आपको यहाँ क्या देखना है? प्लांटर सरफेस पे कहीं कोई रंग चेंज तो नहीं हो रहा, येलो, ब्लू, ग्रीन और ब्लैक. ओके, देन आपको देखना है कहीं से कोई मोटा हिस्सा तो नहीं हो गया. ठीक है, बस उसके उंगलियों के बीच में देखना है कहीं कोई गीलापन तो नहीं आ रहा, कहीं कोई व्हाइटनेस तो नहीं आ रही. फिर आपको नेल्स देखने हैं,
कि इनकी थिकनेस बढ़ती तो नहीं जा रही, कोई नेल अंदर घूम तो नहीं गया. Then on dorsal surface, again you have to see distribution of your hairs, and also कोई आपकी मांसपेशियां कमजोर तो नहीं होती जा रही, पतली तो नहीं पड़ती जा रही, कहीं अंदर से जो धागे हैं, रेशे हैं मांसपेशियों के, ये बढ़ने और उभरने तो नहीं लग गए. That's all. You have to see that much. अगर आप ये देखते हैं, अपने डॉक्टर को इमीडिएटली बताइए. फिर आपको क्या करना है डेली. अब आपका पैर बिल्कुल ठीक है, it's absolutely healthy, there is nothing color change or no abnormality. Then you have to take a पैरों को रोज रात को सोने से पहले ल्यूक वार्म वाटर से आपने उसको वॉश करना है. तो वाटर का टेम्परेचर चेक बहुत इंपॉर्टेंट है. आइदर यू कैन टेक इट थर्मोमीटर, और आप अपने हाथ से या एल्बो से. समटाइम इट्स ए ग्लव एंड स्टॉकिंग टाइप ऑफ न्यूरोपैथी, आपके हैंड्स भी इन्वॉल्व होते हैं, तो आपको एल्बो से टेम्परेचर चेक करना है, कहीं ज्यादा गर्म पानी तो नहीं है. उससे आप पैर धोइए. सिंपल आप टॉवल से प्रॉपरली उसको क्लीन कीजिए. क्लीन करके उंगलियों के बीच में आपने सुखाना है, लेकिन बी जेंटल, क्योंकि ये जो स्किन होती है, इट इज वेरी जेंटल. आप इसको ज्यादा खींचेंगे तो इट कैन टीयर, इट कैन क्रिएट, देयर कैन बी फिशर्स ऑल्सो. लेकिन ये उंगलियों को आपको क्लीन करना बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर यहाँ मॉइस्चर रह जाएगा, यू कैन हैव फंगल इन्फेक्शन देयर, and that can be a triggering point for further infections, and then abscess can be formed. Then आपको आपने एक सिंपल कोई आप पेट्रोलियम जेली या कोई क्रीम आप सिंपल आप उसको स्मीयर करेंगे, ताकि फीट का, दोनों पैरों का मॉइस्चर मेंटेन रहे. क्योंकि ऑटोनोमिक न्यूरोपैथी कैन लीड टू ड्राइनेस, एनाइडोसिस, कैन लीड टू क्रैक्स, एंड दीज क्रैक्स एंड फिशर्स कैन गेट इन्फेक्टेड एंड यू कैन हैव प्रॉब्लम्स. सो आपने उनको आपको मॉइस्चर देना है. उंगलियों के बीच में मॉइस्चरिंग क्रीम नहीं लगानी. बेटर ये रहता है, ये करने के बाद आप सॉक्स पहन के सोइए. मैं यही कहता हूँ बहुत सारे पेशेंट को कि सॉक्स पहन के सोइए, क्योंकि रैट बाइट भी होता है. रात को कई बार चूहे भी काट जाते हैं. बहुत सारे जो लेबरर्स वर्कर्स होते हैं, उनके घरों में वो फ्लोर पे सोते हैं. तो मेरे पास कई बार पेशेंट आता है कि चूहा काट गया और उनको पता ही नहीं लगता, क्योंकि योर ब्लड इज स्वीट, यू आर हैविंग डायबिटीज, योर ब्लड इज स्वीट, और यू आर हैविंग नंबनेस, और आपको बिल्कुल इनसेंसिट फीट है. यू विल नॉट बी एबल टू नो कि आपको कहीं कोई चूहा काट रहा है. तो आप जुराब पहन के सोइए. That's all what you can do simply, and don't do any surgery at home. Corn, callus, nail cutting, ये proper method है. We can go ahead with that also. So डॉक्टर संदीप, थैंक यू फॉर दैट. आपने स्टेप वाइज बताया कि हम अपने पैरों को देखें भी कैसे और ख्याल कैसे रखें. आपने एक सॉक्स की भी बात की और आपने रैट बाइट बात की. मैं अपनी प्रैक्टिस की बात बताता हूँ. रैट बाइट काफी कॉमन है हरियाणा में. Yes. सबसे ज्यादा दिक्कत ये आती है कि जब आप पेशेंट को कहते हो कि जी हमें लगता है कि चूहे ने काटा है आपको, इंस्टेड ऑफ सेइंग थैंक यू कि आपने डायग्नोज Yes. किया और हमें आगे वाली प्रॉब्लम से बचाने में मदद की, उल्टा गाली खाने को मिलती है. जी साडे घर से चूहे नहीं होंगे. मतलब इट इज बिकॉज यू आर, Yes. दे फील दैट यू आर इंसल्टिंग देम. तो अब ऐसा नहीं है, हम भी इंडिया में रहते हैं, चूहे भी इंडिया में रहते हैं, वो भी भगवान के बनाए हुए क्रीचर्स हैं. Yes. तो एक्चुअली प्लीज, इफ लेट अस से यू स्लेप्ट एट नाइट, रात को आप बिल्कुल ठीक ठाक सोए, सुबह उठे तो अचानक छाले या जख्म बने हुए हैं रेड कलर के. अब 33 करोड़ डिफरेंशियल डायग्नोसिस हो सकते हैं उसके. वेस्कुलाइटिस हो सकता है, कैंसर हो सकता है, हजारों चीजें हो सकती हैं, मगर सबसे पहले रेड बाइट के बारे में सोचें. एंड डॉक्टर सूरी ने भी ये कहा है. सर, a few questions from our patients if you can take. सीमा जी फ्रॉम कोलकाता, स्वप्ना जी फ्रॉम वेलोर आपको नमस्ते कर रही हैं. डॉक्टर एनएस Yeah. शारदा सर ब्लेसिंग्स दे रहे हैं अहमदाबाद से. सर इज वेरी सीनियर. सो डॉक्टर संदीप, व्हाट वुड यू वांट टू से टू डॉक्टर एनएस शारदा Just टुडे? हम चरण स्पर्श sir. सर, डॉक्टर शारदा सर, आप हम दोनों से एक्सेप्ट करें प्लीज. हम चरण स्पर्श कर रहे हैं सर आपके. दीक्षित जी पूछ रहे हैं, आई हैव पेरिफेरल न्यूरोपैथी, माय फीट वर्सन. ये क्वेश्चन है, व्हाट शुड आई डू एट होम? सो परहैप्स डॉक्टर सूरी, माय फीट वर्सन इन टर्म्स ऑफ पेन, नमनेस, घर पे क्या करें डॉक्टर दीक्षित, मिस्टर दीक्षित, ताकि उनकी नर्व्स बेटर हो जाएं? See, first thing is that you must get your sugars, blood sugar should be adequately controlled. Proper control of glycemia is very important. So because if there is, and proper control, now we also said there should not be much fluctuations in blood sugars also. So variability should not be that much. It should be stabilized blood sugar, and also take care of hypoglycemia, because you can be vulnerable because of autonomic neuropathy. You can have hypos. So your blood sugar should be best controlled. Your hypertension, if you are having hypertension, it should be best controlled. Your lipids or dyslipidemia should be best controlled.
then don't smoke. I think you may not be smoking, but the smokers should quit smoking if they want to have their healthy feet. So they should quit smoking. So these are important things. And then very important thing, please don't walk barefoot. नंगे पांव नहीं चलना आपको. इवन आप रिलीजियस प्लेसेस पे जाते हैं तो भी आप नंगे पांव नहीं चलिए. इफ दिस वन सिंगल मैसेज गोज ऑफ, जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है, आई एंड संजय नोज व्हाट हैपेंस इन दोज पेशेंट्स जो इनसेंसेट फीट लेके गुरुद्वारे में चले जाते हैं. वंस दे कम बैक, वो अपनी प्लांटर सरफेस तो वहीं छोड़ आते हैं उनकी सीढ़ियों पे. वंस दे कम बैक, उनकी चप्पलों के अंदर ब्लीडिंग हो रही होती है. दे आर नॉट नोइंग कि उनको ब्लड आ रहा है. घर में पहुंचते हैं तो घरों में कोई कहता है कि आप तेरे ਤੁਹਾਡੇ पैरों से खून आ रहे हैं, ਤੁਸੀਂ ਕੀ करके आए हो. तो दिस इज द थिंग दैट हैपेंस. और आप वृंदावन जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, आप फेरी लगाते हो, किलोमीटर्स की फेरी लगाते हो, प्लीज डोंट वॉक बेयर फुट. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. नंबर 2, हवाई चप्पल नहीं पहनिए क्योंकि आपकी पेरिफेरल न्यूरोपैथी बढ़ रही है. हवाई चप्पल और में या वी शेप चप्पल या कोल्हापुरी चप्पल में प्रॉब्लम क्या है कि आपको जो वो फर्स्ट इंस्टेप फर्स्ट मेटाटार्सल और सेकंड मेटाटार्सल के बीच में आपको वो एक स्ट्रैप देते हैं जिसको आप होल्ड करते हो और पीछे कोई हील काउंटर नहीं होता जिसको आप होल्ड, क्योंकि आपको पेरिफेरल न्यूरोपैथी है. आप इफ यू वांट टू होल्ड दैट चप्पल, you will have to have clawing of your toes. You will have to do like that. Only then you can hold on that chappal. That leads to atrophy of intrinsic muscles of your feet. That introsseae, lumbricals, they go atrophied. और जिसकी वजह से क्या है कि एक्सटेंसर मसल जो हैं वो हाइपर एक्टिव हो जाते हैं. That leads to deformity in the toes, and that is claw toe. And this claw toe can have any time, you can have ulcerations at the tip and at the toes and also at the tips and the tops. So you can have problems. So हवाई चप्पल नहीं पहननी, नंगे पांव नहीं चलना, पांव का पूरा ध्यान रखना है. नेल कटिंग एक इंपॉर्टेंट स्टेप है जो बहुत इंपॉर्टेंट है. नेल कटिंग के लिए आपको जब भी नाखून काटने हैं, डू इट आफ्टर टेकिंग बाथ. क्योंकि उस समय जब आप नहा के बाहर आते हैं तो नाखून आपके जो हैं वो मॉइस्ट हो जाते हैं, दे आर सॉफ्टन. बिकॉज इसमें न्यूरोपैथी में जो नाखून की वो हाफ इंच, 1 इंच, 2 इंच तक मोटे मोटे हो जाते हैं और दे आर डिस्ट्रॉफिड और बहुत ही डिफॉर्म्ड नेल्स हो जाते हैं. बहुत जैसे आपके राक्षसों के नाखून देखते हो, एग्जैक्टली वैसे नाखून हो जाते हैं इनके. तो इनको कट करने के लिए देयर आर क्लिपर्स. दे आर नॉट सिंपल. अगर आप अर्ली स्टेज पे करते हो तो यू कैन यूज योर नेल कटर्स, बट कैलिपर्स हैं इनके प्रॉपर मार्केट में, उनसे आप कट कीजिए और किसी की हेल्प लीजिए, दैट इज बेस्ट. और अगर आप हॉस्पिटल में आते हो तो वहां पे भी हमारे पोडेट्री सिस्टम, पोडेट्री प्रैक्टिस है, तो वो दैट कैन गिव यू दैट नेल कटिंग, प्रॉपर नेल कटिंग. और स्ट्रेट काटना है बिल्कुल. नो, डोंट कट देयर एंगल्स, सो कट देम स्ट्रेट. और उनको जो फाइलिंग करनी है वो आगे की तरफ फाइलिंग करनी है. डोंट डू रिवर्स फाइलिंग, आगे ऐसे फाइलिंग कीजिए. सो दैट इज, if you take care of your nails and also the way to wash, to take care of your feet and your footwear, we can have healthy feet. Even if you have the neuropathy, doesn't mean that you are going to have ulcer. Yes, you are having very high risk, but that doesn't mean if you take care of your feet you can have, you can prevent ulceration. So that's a very reassuring message. एक बहुत reassuring message है कि न्यूरोपैथी अगर है तो हाई रिस्क ऑफ अल्सर्स है, बट इट डजंट मीन कि रिस्क रहेगा. और Yeah. अगर हाई रिस्क है तो बस आप ज्यादा चौकन्ने रहें, शुगर का कंट्रोल करें, ब्लड प्रेशर का, स्मोकिंग बिल्कुल ना करें और अपने पैरों का ख्याल रखें. दीप्ति जी एक और क्वेश्चन पूछ रही हैं. सर, इफ यू डोंट माइंड, कैन यू प्लीज शेयर सम टिप्स फॉर वेरिकोज वेन्स? Okay, so varicose veins basically stasis veins हैं. The veins get elongated, enlarged, and distended, leg veins. And females may many time it happens after pregnancy, and due to also obesity contributes it. Then our profession, those who are having standing profession, like they have to stand for hours, like teachers and also policemen, or those haircut guys or barber shops, or then they have this type of problem. And it all depends upon incompetency of your valves. There are valves, they communicate between superficial veins and deep veins, and these valves, once they get deformed or they are not properly functioning, the blood from deeper vein goes into superficial veins and they get distended.
So there can be problem. There can be a edema also. There can be even venous ulcers can be formed, and these venous ulcers are very tough to treat, and they sometimes they persist for many years if you don't treat them in a proper way. So best is to have that compressive bandages or some stockings, or then you can have the that grip on type of stockings, they can be used, or crepe bandages can be used. And try to have your foot elevated, don't stand uh, for longer duration. That is the thing. Otherwise, now there are surgeries, good surgeries are available, like laser therapy, they are available, and there are good surgeries, they are available. थैंक यू सो दीप्ति जी, आई होप दैट हेल्प्ड. एक और क्वेश्चन है एंड ये इंदु जी से है. मैडम की वेजाइनल हिस्टेक्टमी हुई थी 2010 में, तो बहुत साल हो गए, दैट इज 12 इयर्स. मेनोपॉज हार्मोन थेरेपी एमएचटी हम कब देते हैं मैडम? या तो 10 साल हुए हों सर्जरी को, या आप 60 इयर्स से कम हो तब. मगर ऑफ कोर्स अगर जैसे वेजाइनल हिस्टेक्टमी मान लो 30 साल पे हो गई, 35 साल पे, तो इट डजंट, फिर वो 10 साल का कट ऑफ नहीं रखेंगे. वी विल कंटिन्यू अंटिल एक्सपेक्टेड एज ऑफ मेनोपॉज व्हिच इज अराउंड 51 इयर्स इन द वेस्ट एंड अराउंड 47 इयर्स इन इंडिया. तो उसको असाइड रखते हैं डॉक्टर संदीप. मैडम की कंप्लेंट है, मेरी दोनों हिप्स की साइड्स पे हीट निकलती है, लेफ्ट फुट के टोज नंब हो जाते हैं, क्या करना चाहिए मुझे? ड्राइव करते हुए एंड बेड की साइड पे सोने से भी सेम प्रॉब्लम होती है, तो हिप से शायद हीट नीचे की तरफ जाती है फुट की तरफ. Okay. तो क्या क्या Okay. डिफरेंशियल हो सकते हैं, क्या क्या डायग्नोसिस, एंड हम क्या टेस्ट कराएं, क्या इलाज करें? If she is diabetic or not, she is diabetic. Well, नॉट मेंट. okay. So usually, yes, usually this is not a presentation of diabetic peripheral neuropathy, because diabetic peripheral neuropathy usually start distally, then it is bilaterally symmetrical, and then it ascends upward, and also it's a glove and stocking type of distribution. Above knee joint or thighs and hips, if they are involved, they are usually not a part of characteristic of diabetic peripheral neuropathy. That is DSM, that is symmetrical neuropathy. It is the most common variety. You can have amyotrophy, you can have motor neuropathy, you can have a femoral nerve involvement that can be there, or even multiple nerves can be picked up in multineuritis can be there in diabetic neuropathy. But mostly this cannot be. This may be or may not be. But you can have other differential, like there can be lumbar canal involvement, or lumbar canal stenosis can be there. That is your spine, the canal of spinal canal that is narrowed down. So you may be having cauda equina type of, or your lower spinal nerves may be involved, may be having some compressive involvement there. So you must consult some orthopedician or a neurologist or neurosurgeon specifically. So he will go for MRIs, and then he can easily diagnose that what is happening with you. And the symptoms are basically neuralgic pains, neuralgic symptoms. That indicates some sort of irritation or some sort of compression is there in those nerve roots. So that the lower more past part of your spinal cord that is being involved. तो हो सकता है इंदु जी, जो रीढ़ की हड्डी है हमारी, उसके निचले हिस्से में कोई नस दब रही हो. इसको रेडिकुलोपैथी बोलते हैं. एक्सरे से कभी कभी अंदाजा होता है, पर ज्यादातर एमआरआई करानी पड़ती है. तो अगर आप बहुत तंग हो रहे हैं तो टेस्ट करा लें, उससे क्लियर हो जाएगा क्या दिक्कत है. मगर जैसे दीक्षित साहब ने बात की और आप भी कर रहे हैं, ऑफ कोर्स शुगर, बीपी का कंट्रोल, ये तो इम्पोर्टेंट है ही है, और विटामिन भी. सो डॉक्टर संदीप, मोस्ट ऑफ अस आर वेजिटेरियंस. अगर हम नॉन वेजिटेरियन हैं भी तो बहुत कम, शौकिया तौर पे कभी कभार नॉन वेज खाते हैं. तो कौन से विटामिन कम होते हैं वेजिटेरियंस में, एंड हाउ कैन वी रिप्लेस देम? See, vitamin B12 most commonly deficient hota hai, and vegetarians, it's a characteristic feature that vitamin B12 is deficient, and it is directly linked with neuropathy, and you can have similar type of symptoms that can be there in neuropathic, maybe a differential of diabetic neuropathy, because diabetic neuropathy is a term or a diagnosis of exclusion. You have to rule out non-diabetic neuropathy. Then in a patient of diabetes, then you label it as a diabetic peripheral neuropathy. So vitamin B12 comes in it's a great differential, and sometime in alcoholic patients and vegetarians,
it is very, very common to have vitamin B12 deficiency, because most of the sources are from animal sources. So, and but I think it's a milk that is a good source. You can use milk as a source for vitamin B12, but mostly you have to take supplementation. You have to take supplementation if you have got documented deficiency of vitamin B12 and vitamin B12 related peripheral neuropathy. If you are having, or symptoms you are having, then it is it you have to take supplementation for B12 level, but don't over supplement also. You have to take care of that thing. Oral capsules are available, sublinguals are available, sprays are available, and injectables are also available. So you can choose among anything. But now we are now having sublingual or strip kind of thing, that you have a one strip, and that is a very even that passes, that leads to a very rapid level of increased level of vitamin B12 in the blood, because that passes the first pass metabolism of the liver. So you can have very rapid correction of vitamin B12. मैं भी अपनी प्रैक्टिस में ये सबलिंगुअल जो टंग के नीचे रखने वाले विटामिन B12 या विटामिन डी है वो ही प्रेफर करता हूँ। ये तुरंत असर करते हैं और डायरेक्टली जैसे आपने जुबान के नीचे रखे वहीं से ब्लड में हजम हो जाते हैं, तो लिवर या आंतड़ियों के बीच में से नहीं जाते। सो एक्चुअली दीज आर वेरी हेल्पफुल एंड दे एक्ट वेरी क्विकली एंड यू कैन आस्क फॉर अ प्रिपरेशन लाइक एन एमडी, अ माउथ डिसॉल्विंग विटामिन डी। Yes. डॉक्टर शारदा सर पूछ रहे हैं, ऑयल मसाज ऑफ फीट बिफोर स्लीपिंग, इज दिस हेल्पफुल? एनी कैविएट्स, एनी कंसर्न्स? See, it should not be much more irritant. It should not be that much irritant, because neuropathic patients, they don't feel anything. They don't feel it anything. And लगाया तेल या नहीं लगाया, ये उनको ज़्यादा नहीं पता लगता. Only thing, you have to increase the circulation of your feet, and then for that you can use any oil, but it should not be an irritant also. So not like Dabur tail, or not like that. So you can have even mustard oil can be, or coconut oil is the best thing, that is more having more moisture also. But don't put these oil in between the web spaces. In between the web spaces, this oil should not be there. This is very important. सीमा जी एक पॉइंट रेज कर रही हैं, आपको थैंक यू कर रहे हैं फॉर मेकिंग द थिंग्स सो सिंपल। जो कॉम्प्लिकेटेड चीज को आप सिंपल सिखा रहे हैं, एंड शी सेज दैट लिसनिंग टू यू गिव्स मी सो मच कॉन्फिडेंस इन डिलीवरिंग व्हाट आई प्रीच एंड व्हाट आई प्रैक्टिस। सो थैंक यू सीमा जी, इकट्ठे मिलके हम सबको एक Yes. दूसरे से कॉन्फिडेंस मिलता है। मेनी मोर क्वेश्चंस डॉक्टर संदीप कमिंग अप फॉर यू, एंड वंदना जी पूछ रही हैं, एनी रेमेडीज फॉर फ्लैट फुट? Okay. For flat foot, actually, you have to have it's a total surface of your feet that is in contact with the ground. So you have to have arches, metatarsal bars. They're there, or some, or silicone pads. They are there. They increase the convexity of your feet, or they releases this aponeurotic, this plantar aponeurosis that is being stiff. So you create some space in between, or the middle arch is being made more more that is more flattened. So you have something like silicone pads or metatarsal pads, and also heel pads, so that your central part is somewhat elevated from the ground. Your forefoot and heel come in contact, which is usual position of the feet, that your forefoot and hind feet should come in contact with the ground. Your middle part should be elevated. So you can have insoles, and they are very easily available in the market. And these insoles have to be worn maximum time of the day that you walk or you stand, so that the curvature improves. So slowly this is being you can protect your feet from having problems with flat feet. थैंक्स फॉर दैट। सीमा जी एक बात पूछ रही हैं, एंड शी रिमाइंड्स अस, हमारा टॉपिक था फुट केयर एंड फुटवियर। तो फुटवियर Yes. की तो हमने बात नहीं की, तो Right. मल्टीपल क्वेश्चन इफ यू कैन आंसर वन बाय वन। एक तो यह है कि व्हिच फुटवियर इज गुड फॉर पीपल विद डायबिटीज, दैट इज व्हाट मैडम इज आस्किंग। Okay. बट इससे पहले सवाल पूछते हैं, व्हिच फुटवियर इज गुड फॉर एवरीबॉडी, एंड हाउ डू वी गो टू बाय फुटवियर? सुबह, दोपहर, शाम, रात, पैदल चल के जाएं, कार में जाएं, जूते पहन के जाएं, सॉक्स पहन के जाएं? हाउ डू आई go to buy footwear? What do I buy? And साथ में डायबिटीज का भी ऑफ कोर्स जिक्र होगा Yes. ये। Yes. See, it's a very, very important, because footwear related injuries are the most common cause of foot ulceration. Most common cause of foot ulceration, along with barefoot walking.
along with Hawaii chappal. The footwear related ill-fitting footwear is the most common cause of footwear injury, and that can lead to ulceration, and ultimately that can lead to amputation. Problem with diabetic foot is that with neuropathy, whatever the footwear we give to them, they don't feel it in a proper fit. They think that it is either too loose or too small, because उनकी सेंसेशन नहीं होती, उनको ग्रिप तो फील ही नहीं होता, तो उनको लगता है और टाइट करो, क्योंकि इंटरनल अंदर से नर्व्स की फाइबर जो डीप हैं वो तो होते हैं, पेरिफेरल नर्व्स नहीं होते, तो उनको लगता है कि बहुत ज्यादा टाइट फुटवियर होगा ना, वही उनको लगता है हाँ जी अब ठीक है, पर एक्चुअली दैट इज द टाइटेस्ट फुटवियर विच दे आर वियरिंग. So how to buy a footwear? It all depends what type of feet you are having. In diabetes, we categorize our feet whether you are having normal feet. That means no neuropathy, no deformity, no vasculopathy, no previous amputation, nothing has happened. So you are a normal person with diabetes without any other risk factor. So only diabetes is there. So you have got a normal feet. For that, you can purchase any footwear, but best is to have a sports footwear, because like any shoes, good quality shoes like Adidas or any sports wear you can use, or any fleet boot you can wear, and that takes care. So best is to have some sort of rocker bottom. Like rocker bottom हम उनको बोलते हैं कि अगर आप स्पोर्ट्स शूज देखो ना, उनका आगे का पार्ट उठा होता है और सेंट्रल पार्ट जमीन पे ज्यादा होता है, आगे का पार्ट उठा होता है, दैट इज नोन एज रॉकर बॉटम. तो उससे 4 फुट जो है वो एलिवेटेड होता है और 4 फुट प्रेशर भी कम रहता है. उसके बाद आता है हाई रिस्क फुट. हाई रिस्क फुट उसमें है बोलते हैं जिसमें न्यूरोपैथी है, वेस्कुलोपैथी है, डिफॉर्मिटी है, प्रेशर एरिया है, प्रीवियस कैलस भी बन चुका है उसको, तो दीज आर हाई रिस्क फुट. हाई रिस्क फुट में हमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है फुटवियर का. आपको बिना डॉक्टर की सलाह से फुटवियर नहीं लेना. Doctor will examine your feet and then doctor will let you know which type of footwear is used. So best उस समय भी हम लोग sports wear ही ज्यादा prefer करते हैं along with socks, and this footwear should have, आपका जो toe box है that should be wide. जो toe box हम बोलते हैं, wide toe box should be there और deep toe box होना चाहिए. उसका वैम्प, जिसे वैम्प पार्ट होता है, इसको आगे वाले पार्ट को वैम्प बोलते हैं, फिर थ्रोट होता है, फिर आपको ये जो जिसपे आप लेसेस बांधते हैं, देन लेसेस एरिया आता है, फिर कॉलर एरिया होता है, फिर काउंटर होता है. दीज आर द पार्ट्स ऑफ फुटवियर. सो वैम्प एंड थ्रोट शुड बी स्टिफ ताकि आपके पैर को ग्रिप मिले. काउंटर शुड ऑलवेज बी देयर. हील काउंटर के बगैर के जूते नहीं पहनने. और लेडीज पूछ रही हैं तो फ्लैट फुट, फ्लैट हील होनी चाहिए, हाई हील्स नहीं होनी चाहिए. हील काउंटर बहुत इंपॉर्टेंट है. और आगे से टो बॉक्स वाइड होना चाहिए. नैरो जो टो बॉक्स हैं दे आर वेरी डेंजरस. जो आपकी जो और प्रॉपर उसमें वेंटिलेशन होनी चाहिए शूज में. सीम्स जो हैं जो जिनसे वो सिला होता है, दैट शुड बी प्रॉपर. धागा जो है वो अंदर की तरफ होना चाहिए, बाहर की तरफ प्रोट्रूड नहीं करे. ना ही कोई नेल या कोई पिन्स नहीं होने चाहिए. इन सोल को भी आप पता करो कि अंदर जो सोल है, अंदर वाला सोल, वो किस चीज का बना है. प्लास्टर जोड़ ईवा का है, एमसीआर रबड़ का है, या सिलिकॉन है, ये किस चीज का बना है, ये आपको पता करना है. और उससे ये पता करो जो शॉपकीपर है ये कितने दिन तक चलता है. यूजुअली 6 मंथ टू 1 ईयर तक उसकी ड्यूरेबिलिटी रहती है. उसके बाद यू हैव टू चेंज द शूज. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. हम लोग कई कई साल शूज नहीं चेंज करते, पर डायबिटिक पेशेंट शुड सी इट कि ड्यूरेबिलिटी कैसे चेक करना है. तो उसका एक बेस्ट टेस्ट है जो मैं आपको बताता हूं. आप अपना कॉइन लीजिए, जो आजकल तो कॉइन बहुत कम मिलते हैं, पर ट्राई टू हैव 1 कॉइन ऑफ 5 रुपीज समथिंग. प्रेस इट ऑन द इनसोल. उसको आप 10 सेकंड तक प्रेस कीजिए एंड पिकअप, और उसको उठा लीजिए. उस पे अगर आपका 2 सेकंड से ज्यादा कॉइन का मार्क आपके इनसोल पे रहता है, दैट मींस उसकी ड्यूरेबिलिटी लॉस हो गई है, तो आपको वो चेंज करना चाहिए. उसका आउटसोल है, आउटर साइड वाला, इट शुड बी वेरी टफ, ताकि कोई नेल वगैरह नीचे से एंटर नहीं कर जाए. तो दीज आर द थिंग्स. अब आपको परचेज कब करना है? यूजुअली इट शुड बी डन इन द इवनिंग आवर्स, ताकि इवनिंग आवर्स में आपके पाँव की जो स्वेलिंग होती है, थोड़ा बहुत सोलन साइज होता है, उसके हिसाब से आपको फिट कर लेते हैं. अगर आप डे टाइम वियर करेंगे तो ना, शाम के टाइम जैसे अब हम लोग बैठे हैं तो हमारे पैरों में नेचुरल स्वेलिंग आ जाती है. और डायबिटिक पेशेंट में ये बहुत ज्यादा होती है ड्यू टू ऑटोवीनस इनकम्पिटेंसी, ड्यू टू वेस्कुलर एंड ऑल्सो न्यूरोपैथी. तो एडिमा इज वेरी हाई. सो उससे साइज बढ़ जाता है, और अगर वो तो प्रॉपर फिट नहीं हो पाता. सो दिस इज ऑल. और जब भी आप जूते पहनते हैं, नए जूते खरीदते हैं, उसको 2 घंटे से ज्यादा कांस्टेंट वहीं नहीं पहनना. बहुत बार ऐसा होता है, खासकर लेडीज में, मैरिज से 1 दिन पहले जूता खरीदा जाता है. मैरिज में जाते हैं, डीजे पे डांसेस होते हैं या कहीं और सेलिब्रेशंस में होते हैं, एंड दे कम आउट विद सम ब्लिस्टर और सम
redness mark or some ischemic ulcer that is being formed within 1 day of that marriage event. So 2 घंटे से ज्यादा उसको नहीं पहनना, और उसको उतार कर आपको पाँव को अच्छे से दोबारा देखना है, whether there is any warmth, any discoloration is there, any soreness is there, any hardness is there, how you felt with the footwear on. So that has to be checked. If there is an increase in temperature, you have to tell your doctor that this is not proper footwear. आपने जब भी footwear लेना है उनको कहना भैया मैं change कराने आऊंगा, I have to rechange it again because I am diabetic, I have to change it according to my doctor. So this you have to say. And जब भी आप जूते पहनते हैं पहले उसको हाथ डाल के उसमें देख लीजिए, there should not be any foreign body inside. So this you have to take care. And if you have got an ulcer, or sorry, if you have got an ulcer or cellulitis, or previously you had some amputation, then you have to go for the therapeutic or customized footwear, for which we have to take foot pressures. You have to go to a proper podiatrist, and we take foot pressures, which drive the whole foot length and width of the foot, and we ask for that type of footwear, and that is being custom made or custom molded shoes. They are being formed for these type of patients. विभा जी भी थैंक यू कर रही हैं फॉर ऑल द इन्फॉर्मेशन, एंड आई आल्सो थैंक यू. हमारे एक सुनने वाले हैं सुपरस्टार बच्चा, मजा आ गया. सो सुपरस्टार बच्चा आल्सो ग्रेट सेशन गोइंग ऑन सर, बट सुपरस्टार द सेशन इज ग्रेट बिकॉज़ यू आर विद अस, दैट्स व्हाई इट्स अ सुपरस्टार सेशन. Yes. सो सम मोर क्वेश्चंस रिलेटेड टू फुट. अर्चना जी कहती हैं द एरिया अंडर माय हील पेन्स, पियर्सिंग पेन फॉर द लास्ट 10 days. एंड मैडम एक क्वेश्चन पूछेंगे एंड वील टेक इट वंस यू आंसर. जब आप सुबह उठते हैं, व्हेन यू पुट योर फुट ऑन द ग्राउंड, सबसे पहले जब आप पाँव रखती हैं जमीन पे, तब दर्द होता है या नहीं होता, या ये सिर्फ लंबी देर चलने से होता है? इफ यू कैन आंसर दैट, देन डॉक्टर संदीप विल कैरी ऑन विद द डिस्कशन. In the meanwhile, Dr. Pratipati Rambabu, Dr. Rambabu says, can anti-diabetic drugs cause neuropathy? Any examples? Okay, so metformin has been labeled that it decreases your vitamin B12 level, it decreases absorption, GI absorption of vitamin B12 level. So, but we have to be careful for that. These patients who are taking full dose of metformin and longer duration of metformin use, we have to be careful. But not that much common, not that much problem is there. But we are aware that metformin causes but can lead to vitamin B12 deficiency. So just take the B12, and the easiest is to take that sublingual tablet actually. Yeah. Vandana ji कह रही हैं कि because of flat foot, my left foot toe, the big toe, is growing inwards towards the fingers. Yes. So that is the deformity of the toe. Hallux valgus हो गया. Hallux valgus, yes. Is this common? What should we take care of? Yes. You have to have fillers. You have to have pads in between the great toe, which is going inside, because you can have problem here. So you have to have some pad or some filler or silicone pad has to be there, so that it should not go inside. You have to have a orthosis that takes care of it, that makes it more plantigrade and make it much more straighter, not allowing it to go inside. Then you can have silicone pads at the middle part of your feet, so that your front foot and hind foot come in contact with your the ground. So these changes can be made very easily by any orthotist. Any orthotist can make these are very common things, but you must take care, because otherwise you will have this will keep on increasing, and then you can have problems. If you are a diabetic, then these can be a very great cause of ulcer and amputation. So it's good to prevent earlier. रेशमा जी एक क्वेश्चन पूछे हैं, I think which all of us wanted to ask. So रेशमा जी के मम्मी की सोल पे painful corns हैं, corn type lumps. So what is the treatment for corn, and what treatment should we not take for corn? Yes, usually there are corn caps. They give corn caps, but corn caps and they should not be used, because होता क्या है, कॉर्न कैप एक सेंटर के अंदर एक एरिया खाली होता है और उसके बाद एक रिंग शेप कैप होती है. तो उनका पर्पस क्या होता है कि कॉर्न को इस्कीमिया करके कॉर्न की ब्लड सप्लाई कर, एंड इट विल शिवल ऑफ. बट व्हाट हैपेंस, ड्यू टू दिस कैप, surrounding area gets macerated, and this become a bigger ulcer. So corn caps are strictly prohibited. And also don't use any sialic acid or any urea type of thing, or any phenol for removal of corns. So best is to go for some dermatologist. He will apply some laser
or he will remove it with any scalpel or something. And also sometimes you may be requiring it, it is not a corn, some it may be a wart also, so that can be there, that can be there. So, and most common cause of corn and calluses is pressure area. So look at your footwear which you are wearing. Avoid barefoot walking. So this, because that is the most common cause of having corn and calluses. barefoot walking जो लेडीज में खासकर जब वो गीली जमीन पे या गीले फर्श पे, खासकर रसोई में, किचन में एंड इन बाथरूम्स दे कीप ऑन मूविंग, पोछा लगाया उसके बाद मूव करती रहती हैं, तो दैट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ these type of things. So avoid barefoot walking absolutely. Take care of your footwear properly. Wear proper footwear at home also. It is not हवाई चप्पल आपको बाहर नहीं पहननी, हवाई चप्पल घर में भी नहीं पहननी आपको, barefoot walking घर में भी नहीं करनी आपको. And the type of chappals we advise for home, it is just like a if flight chappal होती है, that is a broader space, toe बहुत broad होता है और पीछे से हील काउंटर भी होता है उसमें, स्ट्रैप टाइप. और क्रॉक्स की चप्पल भी आती हैं, दे आर ऑल्सो वेरी लाइट एंड वेरी गुड एंड वेरी, बट उनमें मैं एक और चेंज मैंने पीछे करवाया था उनको बोल के कि वो लोग एक्यूप्रेशर टाइप के पॉइंट्स बनाए होते हैं उन्होंने, दाने बने होते हैं, तो वो नहीं यूज करना डायबिटिक पेशेंट को. एक्यूप्रेशर लाइक पॉइंटेड इन सोल वाली कोई भी चप्पल नहीं पहननी, बिकॉज दैट कैन ऑल्सो लीड टू प्रेशर अल्सर्स and that can also lead to callus formation. So if you take care of these things, then I think you can have remission from corns also. So that's very important and good news. एक आपको नमस्कार कर रहे हैं डॉक्टर अंशुल, who is from Bhilai in Chhattisgarh, and also salam कर रहे हैं डॉक्टर नूर आगा दानिश, who is from Afghanistan. Yes, And yes. Dr. Noor Aga says that diabetic foot is very common in Afghanistan, just like in India. Yes. Yeah. For both Dr. Anshul Singhai and for Dr. Noor, if you could just put in your email IDs in the comment box, Dr. Sandeep Suri will be happy to reach out to you. And Yes, actually, sure. Anshul and Noor, you will find that Dr. Sandeep will be able to kickstart podiatry services in your part of the country, in your part Yes, of the world. definitely. विभा जी पूछ रही हैं, can flat foot cause heel pain? Yes, yes, definitely. Definitely, it can cause to plantar fasciitis. Then your, maybe it is your not plantar fasciitis, your plantar aponeurosis is very tight, very stiff, and it has lost the elastic strength. So, and also with flat foot, your heel pad and your plantar foot fat pad, that is also is not properly distributed. So your more of bone part or your bony part is touching the ground. So, and also very commonly this can lead to plantar fasciitis. The calcaneal spur can be formed, and that can lead to these type of pain. So always take care of flat foot if that is there, and also take care of your plantar fasciitis, because for that you can have rolling exercises. Any good physiotherapist that can tell you that how to take care of these things. And the help of physiotherapist is immense in using treating this flat foot and plantar fasciitis. सीमा जी पूछ रही हैं, आपने बात की कि जूते पे कॉइन प्रेस करना है, तो Yes. कहाँ करें, कैसे करें? देखिए, जूता आपने उतारा, जूता उतार के आपने सेंटर में उसको कॉइन डाल दीजिए, इनसोल में उसी वहीं प्रेस कीजिए, दैट्स ऑल. वहीं प्रेस कीजिए, 10 सेकंड तक प्रेस करके आप हटा लीजिए एंड लुक और ब्रिंग दैट, और उसको उठाइए कॉर्न, उसको कॉइन को, एंड यू कैन सी द मार्क. आप उसको निशान देखेंगे कॉर्न का, जो उसका कॉइन का कितनी देर तक रहता है. That will tell us whether the shoe is safe or not. Yes, durable or not. क्योंकि Durable एक or not. ड्यूरामीटर, yes, if there is a ड्यूरामीटर is also there. That usually इनके पास होता है, जो भी आप शूज वगैरह देते हैं, जो सेलर होते हैं, they do have this ड्यूरामीटर, and that can check the shore strength, that is known as shore strength, SHOR, shore strength of the insole. Dr. Anshul का क्वेश्चन है, diabetic socks, are they useful? Any do's and don'ts? See, we don't believe in any diabetic socks or any specific diabetic footwear. Actually, you have to get it through your healthcare physician if you are having. But for socks, it is very important that socks should be cotton socks. It should not be nylon socks. Cotton socks with the seams should be very smooth. Seams should not be that much hard. Seams should not be there. It should be up to just 2 or 3 inch above the ankle joint. It should not be ankle socks, जो आजकल बहुत
फैशन में है एंकल सॉक्स, वो नहीं होनी चाहिए। एंकल से कम 2-3 इंच ऊपर तक सॉक्स होनी चाहिए। जो इसका अपर इलास्टिक है दैट शुड बी वेरी लूज, अदरवाइज यू विल कॉम्प्रोमाइज द ब्लड सप्लाई टू योर फीट। सो योर इलास्टिक शुड बी लूज। अगर वो इलास्टिक थोड़ा टाइट है तो आप उनको उल्टा करके पहन सकते हैं या उसको अप्रोल टर्न करके पहन सकते हैं, जिससे वो इलास्टिक की जो स्ट्रेंथ है वो लूज हो जाती है। और ट्राई टू वियर सॉक्स मैक्सिमली। लेडीज को सॉक्स पहनने में प्रॉब्लम ज्यादा फील करते हैं, लेकिन सॉक्स जितना ज्यादा पहनेंगे, विदाउट सॉक्स फुटवेयर नहीं पहनना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इंक्रीजेज द शियर स्ट्रेस। रगड़ ज्यादा लगती है उसको, फ्रिक्शन स्ट्रेस ज्यादा होता है फुटवेयर से अगर वो बिना सॉक्स के पहनते हैं। और आजकल पैडेड सॉक्स आती हैं, दे ऑल्सो आर वेरी गुड, दे आर वेरी सॉफ्ट एंड पैडेड सॉक्स, पैडेड दे आर ऑल्सो वेरी गुड। नसरुल्ला जी एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं। नसरुल्ला जी, रमजान मुबारक, एंड ही इज कीपिंग द रोजा रमजान फास्ट। ओके तो ओके। इरफान जी, अटोरवास्टैटिन, कैल्शियम, न्यूरोबियन, ये सेम चलेगा? विल्डाग्लिप्टिन प्लस मेटफॉर्मिन प्लस 50 प्लस 500, ये भी सेम चलेगा? यू आर टेकिंग ट्वाइस अ डे एंड यू कैन कंटिन्यू, यू डू नॉट नीड टू स्टॉप। सिर्फ हमारी इंसुलिन है 3070, विच इज 24 इन द मॉर्निंग विद सुहूर एंड 22 एट नाइट विद इफ्तार। वी कैन चेंज इट टू 12 इन द मॉर्निंग, हाफ कर दें। बिकॉज देखें, पहले आप नाश्ता भी कर रहे थे, लंच भी कर रहे थे, अब लंच हम नहीं करेंगे, रोजा रखेंगे। तो सुहूर से पहले 12 यूनिट्स, एंड इफ्तार के साथ या इफ्तार के बाद भी 22 यूनिट्स लगा सकते हैं। बिकॉज यू आर हंग्री, यू यस। डोंट नीड टू वेट फॉर हाफ एन आवर। तो जैसे आप रोजा तोड़ें, एक खजूर खा सकते हैं, 4 इकट्ठी मत खाना, 1 इज इनफ। And then so it will become 12 plus 22. Lot of people thanking you, and Sajan Yadav sahab पूछ रहे हैं, डॉक्टर साहब, foot mechanics also correlates with back pain in diabetic patients, and this is very correct, Yadav sahab. So Dr. Sandeep, would you like to speak about this? अगर हमारे पैर में खराबी है या हमारे यस चलने में, जूते में खराबी है, तो पीठ पे क्या असर पड़ता है? Yes, you will have over either you will have stiffness at the level of your hip joint or your pelvic joint or your lumbar spine. It will become more stiff. Your posture will be different. It will not be an appropriate posture. Your stance will be also different. Your gait length or your how you walk, that your the like heel stance movement of your feet, that is also toes touching, then touching of heel off, then touching. The whole of the gait process is being hampered if you have got bad biomechanics of your feet. So very commonly, it is more of muscular involvement that can be there. Yeah, sorry for the phone call. So definitely this bad foot mechanics leads to lot of anatomical changes, lot of pathophysiological changes at the different upper joints. Even hip joint involved, even knee joint is also involved, and spinal muscles are direct connection. They are in direct connection with your feet. So how you walk and how you take care of of your stance, that also depends. Then that can lead to problem with your spine also. डॉक्टर पवार सर पूछ रहे हैं, एनी एडवाइस फॉर टेंडोएकिलाइटिस? Okay, same thing. It has to be there. You have to go for the stretching, but stretching will be best by the physiotherapist. He will take care in a proper way. It should be very delicate. And diabetic patient, they have this tendo Achilles shortening also, so that can also lead to problem in your gait, and also that can lead to increased forefoot pressure and also ulceration at the forefoot level. So and it's a more of manipulation type of thing they do for physiotherapy. They manipulate it, and if still there is a problem, they can give you some cast also, so that it may get relieved. Otherwise, you can take help of an orthopedician, but physiotherapist is the best person to deal with the tendo Achilles problem. फिजियोथेरेपी बहुत हेल्प करेगी सर आपको। आप एक बार ट्राई करके देखें, और पहले 2-3 दिन लगेगा कि कुछ भी नहीं हो रहा, बट फिर भगवत गीता में भी लिखा हुआ है, एक्शन इन एन एक्शन एंड इन एक्शन इन एक्शन। तो एक्चुअली आपको 2-3 दिन में दिखाई देगा कि आपको सडनली फिजियोथेरेपी वाले याद करा देंगे कि आपकी बॉडी में ये भी टेंडन था, ये भी मसल थी जो आपने कभी इस्तेमाल ही नहीं की लाइफ में। फिर जब वो इस्तेमाल कराएंगे तो वो मसल्स काम करना शुरू कर देंगे, मदद करेंगे आपकी। Yes. अर्चना जी ने, डॉक्टर संदीप, पॉइंट रेज किया था ना अबाउट पेन इन द हील, पियर्सिंग पेन इन द हील।
Yes. So she says it pains as the foot touches the floor in the morning. मतलब सुबह जब उठती हैं, पाँव रखती Yes. हैं जमीन पे बिस्तर से, तो वहीं से दर्द स्टार्ट हो जाती है. That is same. That is a plantar fasciitis that requires silicone pad and also manipulation, also physiotherapy. Some exercises are there to relieve that pressure on that calcaneal spur is there, if that is there, or sometimes it is simple irritation of plantar aponeurosis. So physiotherapist is the best person that can take care of this plantar fasciitis very well. It's a treatable thing, but until unless you treat it, this can lead to problem also. Your gait can be changed. आप चलते कैसे हैं वो चेंज होगा, इससे आपकी नी जॉइंट्स पे प्रॉब्लम आएगी और आपकी हिप जॉइंट पे और स्पाइनल मसल्स में प्रॉब्लम आएगी. And Dr. Anshul has a question. Any comments on metabolic bone disease or fracture with SGLT2 inhibitors? Okay, so SGLT2 इनहिबिटर में अगर आप स्पेसिफिक पूछते हो तो कैनाग्लाइफलोजिन के अंदर उनकी ट्रायल्स में, उनकी फेज 3 ट्रायल्स में और कैनवस प्रोग्राम के अंदर देयर वाज हायर इंसिडेंस ऑफ फ्रैक्चर. विटामिन डी डेफिशिएंसी भी आई है उनकी ट्रायल्स के अंदर. बट अदर ट्रायल्स अगर आप देखते हो तो उनमें जैसे क्रीडेंस ट्रायल के अंदर कैनाग्लाइफलोजिन हैड नॉट शोन एनी प्रॉब्लम विद फ्रैक्चर. बट द फ्रैक्चर जब बाद में हमने एनालाइज किया तो इट वाज मोर ऑफ अपर लिम्ब फ्रैक्चर्स and also fractures they were linked with postural fall. So postural drop, postural hypotension related fractures were more, not like that hip fracture or osteoporotic fractures नहीं थे इतने. तो इसलिए पर कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, but we are vigilant when we use this molecule, specifically in osteoporotic females. We are vigilant in using this molecule, but mostly it is not like that कि बहुत ज्यादा commonly. इससे ज्यादा तो इवन समटाइम पायोग्लिटाजोन से रिलेटेड ज्यादा ऑस्टियोपोरोसिस होता है, दैट इज डायरेक्टली डिक्रीजिंग योर विटामिन डी लेवल. सो इसमें इतना नहीं है, बट यस इट वाज देयर इन द ट्रायल्स. राइट. एंड सीमा जी पूछ रही हैं, इफ मेटफॉर्मिन decreases the absorption of vitamin B12, so does that mean that everybody with metformin should get vitamin B12, at least vegetarians? No, it should not be. Actually, the blood level of vitamin B12 and cellular level of vitamin B12 is a different story. So it's a very debatable concept that whether we should treat this blood level vitamin B12 or not. So we should rely on symptomatology. If your patient is having peripheral neuropathy, patient is on long-term metformin, and this neuropathy is worsening, and your glycemia is under good control, and still it is worsening, then you should take and you should go for that serum level of vitamin B12 and you should get it corrected. For that, it is not to omit metformin, not to omit. This is the backbone of therapy. Remember, we are not going to stop metformin at this level, due to this problem. We have to take vitamin B12, sublingual vitamin B12, even calcium can be taken. That also increases absorption of vitamin B12. So these two things can be very helpful, and you are able to manage it very properly, and you can get your B12 level properly, come back to normal value. Even you are continuing with metformin, not to stop metformin. Dr. Sandeep, many questions still waiting to be answered. So Yeah. it's 8 p.m. Sapna Jainji from Vellore, she says, any advice for shoes? आपने काफी कुछ बता दिया, but of course, Sapna ji, it will depend upon what you need the shoes for. आपको party wear चाहिए या casual wear. But let us say working shoes. Madam handles showroom, so she has to remain standing for a long period of time. So working shoes for gentlemen, for ladies, क्या खरीदें क्या ना खरीदें? Best is sport shoes. They are very comfortable. Sport shoes, you can have different colors also. Different colors, maybe black color or brown color that matches with your attire or your dress. So that is the best thing. So that is the most comfortable. That and the insole is most comfortable. Otherwise, you can have the leather shoes also with a good quality insole. So good quality of insole that matters, and the shoe should be airy, and that should not have any problem. Your feet should be very comfortable, and you should check your feet regularly. Well, after coming back to home, after coming from the job, so you must check your feet regularly. So that is all. But never go for the narrow toe shoes. Important high heel shoes, not to be. और डॉक्टर नूर आगा पूछते हैं, दोनों ही अच्छे हैं डॉक्टर नूर आगा, डुलॉक्सिटिन एज वेल एज प्रीगाबलिन,
Yeah. for neuropathy, and Yes. perhaps we Yes. can have a separate session on neuropathy alone. Yes. Pratima ji point raise कर रही हैं, I am a diabetic for the past 2 years on metformin and Ozempic weekly. Ozempic is Okay. semaglutide. Lately, Okay. my feet become very cold by evening time. HB1C is normal, sensation is normal. I just wear diabetic socks. Is that okay? And any other diagnosis, madam, actually age चाहिए होगी आपकी, that will help us answer. But Yes. any other comments you have for this? Feet becoming cold by evening. Yeah, best is to get for your ankle brachial index also. Your vascularity should be checked. Ask your doctor to check the palpate for the your pulses, dorsalis pedis, posterior tibial must. Then if that is if the ankle brachial index machine is available, you get your ankle brachial index that indicates the how much blood supply is there in your feet. So that's all. If you are having it is beyond above 0.9 to 1.1, then that means you are okay with your vascularity. If any of the two vessels are palpable, then that means you are also okay with your vascularity. संजीव पुरी जी हील पेन का पूछ रहे थे, तो यूरिक एसिड तो जरूर करवा लें सर, मगर Yes. उसके अलावा एक कैल्केनियल स्पर, सो मे बी एन एक्सरे वुड बी रिक्वायर्ड Yes. एट एज Yes. 70. और lots of thanks and appreciation for you from Vipin ji, from Reshma ji, Pratima ji, Dr. Vinny Kantru, who works at Apollo Hospital, New Delhi. She's a pulmonologist. She thanks you for sharing your expertise. एंड सीमा जी कह रही है हेयर फॉल पहले भी कहा था, बट सीमा जी अब देखो ना, सी अब संदीप Both प्राइमरी are suffering. प्रिवेंशन, नो प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन, टर्शरी प्रिवेंशन. तो मैडम कह रही है ब्रिंग अ डिस्कशन ऑन हेयर फॉल बिफोर आई Yes. गो बॉल्ड, बट सूर्य और मैं हम तो होली है जो होना था, Okay. बट Yes. आपको बचा के रखेंगे, डोंट वरी. Yes. तृप्ति जी ने भी पॉइंट आउट किया व्हाट यू हैड सेड अर्लियर, ड्यूरोमीटर for sure hardness. So if you go Yes. to a good shoe store, you can ask them actually upfront, do you have a durometer? And they should be trained actually. If they are not trained, we Yes. find a different shoe store. Yes. विभा जी आपको सिटी पूछ रही हैं डॉक्टर संदीप, वेयर आर So यू I'm बेस्ड? from Hisar, Haryana, Hisar. हरियाणा, और मैं हूँ करनाल का छोरा, अगेन हरियाणा, छोटा Yes. सा स्टेट है हमारा. विनी, डॉक्टर विनी हैज अ क्वेश्चन. जख्म बन गया फुट पे, when should you be alarmed? When should you seek medical help? When can you feel that I'll just wait for 5 days and it'll become okay? Just some general rules. Please don't do it. Ulcer means emergency because time is tissue. Time is tissue. You may not be knowing it. Ulcer is there. If you take even one step, it can increase. The whole pus or whole infection can go up along with your tendon, sheets of muscles, muscle fiber. It can go up, and within 24 hours you will have these problems, and your doctor will say कि ये तो, or maybe within 20 to 48 hours it may be a life-threatening issue. So don't wait. Once the skin is broken, once your is broken, you have to go to your doctor as early as possible. Don't do any home remedy. Don't do any surgery. Don't do any bandages using betadine, using hydrogen peroxide, using Savlon, using Dettol. Please don't do it. और किसी भी फेथ हीलर पे नहीं जाइए. आज भी मैंने एक पिक्चर शेयर की थी डॉक्टर संजय से कि पेशेंट मेरे केम टू मी विद डायबिटिक पेरिफेरल न्यूरोपैथी है, और उसने अपने जूतों के अंदर एक घास के पत्ते रखे हुए और प्लांट लगाया हुआ अंदर उसमें डाले हुए कि मेरे को इससे अमर बेल डाला हुआ उसके अंदर कि मेरे को इससे पैरों में रिलीव हो जाएगा. तो रिलीव तो क्या होगा, उसको अल्सर और हो जाएंगे. तो दिस टाइप ऑफ थिंग्स, प्लीज डोंट गो टू एनी फेथ हीलर. Immediately report to your doctor. He will say, look at the ulcer. He will decide whether it is neuropathic ulcer or whether it is a neuroischemic ulcer. Along with, after that, he will decide the therapy, the modality, and how to proceed for that. Go for debridement, regular dressings. If the initial stage, if it is not infected and or it is milder infection, it has not spread up or it has not led to osteomyelitis, it is very easy to treat. It is very easy to treat. Within 1 month, 1.5 months, it will heal. But go with the proper advice of your doctor, because one and important advice that is offloading. आप एक भी कदम उसके ऊपर खड़े होंगे, single pressure, single step, if you take on ulcerated feet, it can worsen.
आप देखिए कुछ भी ओपन आपका वुंड है, इफ यू प्रेस इट ऑन द ग्राउंड इट विल ओपन फर्दर, इट विल ओपन, इट विल नेवर क्लोज, इट विल नेवर क्लोज. तो अगर आप कहते हो कि मैं पाँव से जस्ट वॉशरूम जाता हूँ, बाथरूम जाता हूँ, आप उस पे आपको ऑफ लोडिंग डिवाइस के बगैर नहीं जा सकते. यू कैन टेक हेल्प ऑफ योर क्रचेस, आप वैसाखी ले सकते हैं, स्टिक्स ले सकते हैं, वॉकर ले सकते हैं. आपको टोटल कॉन्टेक्ट कास्ट भी हम लोग देते हैं कई बार, एंकल फुट ऑर्थोसिस भी देते हैं, पीटीबीओज देते हैं, और शूज भी हम बना के देते हैं, रॉकर बॉटम शूज, जिससे फ्रंट फुट ऑफ लोड होता है. तो दिस कैन बी देयर, बट ऑफ लोडिंग इज मस्ट. एंड टेक केयर ऑफ योर अल्सर एज अर्ली एज पॉसिबल. डोंट वेट फॉर इवन सिंगल आवर. ये इमरजेंसी है, इसको पैर का हार्ट अटैक बोलते हैं, समझ लीजिए. So very strong message coming across from Dr. Suri. And once we understand this, then of course we'll go immediately. Offloading का मतलब ये है कि आप प्रेशर ना डालें. एक्चुअली पुराने जमाने में तो प्लस्तर चढ़ा दिया करते थे यस यस ताकि बोझ ना पड़े पैर पे. एंड जो एक क्वेश्चन था अर्चना जी का, अगर पेन बहुत हो रही है हील में तो यू कैन टेक अ पेन किलर. A simpler way would be to keep on changing your chappals or slippers or shoes every 2 to 3 hours because हर एक के अलग-अलग pressure points होते हैं. And but the trip to the physiotherapist will help you the most actually, Archana ji. यस That will help you more than the painkillers. यस. There are many other questions, Dr. Pratipati. Please allow us to take them later on diagnosis of neuropathy. अनिल कुमार भाटिया जी पाइग्लिटाजोन पूछ रहे हैं, ऑस्टियोआर्थराइटिस में you can take. And the pain over the feet, रेशमा जी, can be because of uncontrolled diabetes, but आप कह रहे हैं नहीं है. It can also be because of neuropathy and osteoporosis. तो in general अगर पेन होती है ज्यादा चलने पे, काम करने पे, it will be because of bone or muscle. अगर पेन हो रही है रेस्ट पे, आराम करने पे, it will be because of neuropathy or diabetes. Dr. Vinny has a question about acupuncture and Okay. foot problem. So acupuncture usually हम लोग डायबिटिक फुट में नहीं देते. Acupressures has been tried and TENS has been tried, that or transcutaneous nerve stimulation has been tried, and infrared lamp has been tried, and they show benefit. They are benefit. They do additional benefit. They show additional benefits in if you go along with the medication like pregabalin, duloxetine, and TCAs. So that they are beneficial, but added advantage is there. TENS will help a lot, Dr. Vinny. Yeah. Transcutaneous electric nerve stimulation. If you are going to a physiotherapist and the physiotherapist says कि मैंने कभी डायबिटीज का पेशेंट ट्रीट नहीं किया, उनको बोले जो आपकी IFT मशीन है, इंटरफेरेंशियल थेरेपी मशीन, उसमें टेंस का ऑप्शन होगा. एंड व्हाट काइंड ऑफ इंटेंसिटी विल दे यूज? उनको कहना जब आप ऑस्टियोपोरोसिस में यूज करते हैं तो आप थोड़ी सी हैवी इंटेंसिटी यूज करते हैं. हमें बोन के लिए नहीं चाहिए, नर्व के लिए, तो हल्का हाथ रखें हम पे. जस्ट से दैट एंड बिगिन स्लो एंड देन गो अप. Dr. Suri, thanks to you from Bangladesh as well, from Mr. Nasrullah Irfan. So Bangladesh, Afghanistan, everybody logged in today. Vandana Mathur ji आपकी अपॉइंटमेंट चाह रही हैं, तो Dr. Suri is available in Hisar. So anytime Dr. Sanjay will say, and I am available. It's through Sanjay. All the questions on intermittent fasting, Gurvinder Kaur ji, please allow us to address later on. ये पहले भी हम एड्रेस कर चुके हैं पिछले एपिसोड्स ऑफ केके मेड टॉक्स में. And Pratima ji, thank you for making Haryana proud. संजीव पुरी जी एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, if you don't mind sharing any brand name, any good company for sublingual vitamin B12 and sublingual vitamin D. Any good company? Oh, sublingual vitamin D is now they are in nano shots, like Abbott company. They have got nano shots of vitamin D. So simple bottle and you just have it in one go. And ME2, ME12. This is a Abbott company also has got vitamin B12, and there are many companies you can go from. You can see from the net also, and you can use them. Other good ones would be Osmelt MD, OZMELT, MD for vitamin D. Quicobel, QUIC, Quicobel for vitamin B12. They are paper tablets. सजान जी एक पॉइंट ऐड कर रहे हैं टू योर एक्सप्लेनेशन, सो थैंक यू यादव साहब फॉर दैट. लेग लेंथ डिस्क्रिपेंसी, अगर दोनों लेग्स की लेंथ में फर्क हो, दिस आल्सो अल्टर्स फुट प्रेशर and that can cause foot ulcer. So when you're assessing a patient, then you must look at the length of the leg as well. Yes, definitely. And thanks to everybody. Gurvinder ji, we apologize. फिर से आपका क्वेश्चन ले लेंगे इंटरमिटेंट फास्टिंग पे. आज का हमारा टॉपिक था फुट केयर एंड फुटवेयर.
प्रतिमा जी ने लॉगिन किया है फ्रॉम द यूएसए, सो थैंक यू फॉर दैट एज वेल। एक और फुट का क्वेश्चन था गुरविंदर जी का, दिस इज रिलेटेड टू फुट। मेरी फुट की स्किन उतर रही है फ्रॉम द टो पार्ट, व्हाट टू डू? दर्द भी होती है। Okay, okay, Skin okay. is That means, yeah, you are having some sort of neuropathy, that is autonomic neuropathy. Dryness of skin is there, and there is overscaling of the your epidermis is there. So you have to get your blood sugars under control, and also you can use moisturizer, and and be very careful with the peeling of your skin. Don't be more aggressive in removing these peels, and try to retain as much as possible. Wear socks and use some emollient gel or some moisturizer at night, and take care of your blood sugars in a proper way. Don't walk barefoot. That is very important. अगर खारिश खुजली बहुत ज्यादा, इट कैन बी अ फंगल इन्फेक्शन आल्सो। Fungal infection, yes. Yeah. दिखा दें एक बार। So with this, Dr. Sandeep, it's already 11 minutes past 8, और आपने इतनी सारी हमें बातें बताई फुट केयर के बारे में, फुट वियर के बारे में। We apologize again to everybody, including Ghulam Mustafa Sahab and Ravinder Katyal ji. We've not been able to take all the questions today, but आगे वाली episodes में लेते रहेंगे। तो Dr. Suri, any take-home message for everyone? See, only thing, take care of your feet just as your face, and this is very important. आप जैसे अपने चेहरे का ध्यान रखते हैं, अपने पाँव का भी इसी तरह ध्यान रखिए कि मोस्ट प्रेशियस गिफ्ट आपको गॉड की तरफ से मिला है। इसका पूरा ध्यान रखिए, और कुछ भी इसको प्रॉब्लम आती है, अपने हेल्थ केयर फिजिशियन को रिपोर्ट कीजिए। घर में इसका ट्रीटमेंट नहीं करना, ये ध्यान रखिए, क्योंकि जितनी जल्दी आप पहुंचेंगे, चाहे कुछ भी हो, इफ देयर इज एन अल्सर और एनी ब्लिस्टर और एनी क्रैक इज देयर or any fissure is there, any redness, any fungal infection, if you report early, it will be treated very easily, very easily. And especially Curious 9 जी का क्वेश्चन है, मम्मी 61 years के हैं, 61 means के डॉक्टर को दिखाना चाहिए, comparing of Yes. sticking feeling in the skin and also having recurrent corns. So already Dr. Suri said कि corns का घर पे आप इलाज ना करें, Yes. एक बार Yeah. दिखा दें, they can be treated. गुरविंदर जी पूछ रहे हैं, can I use silicone toe? Silicone toe, in between the pad, you can have pads of silicone, or silicone toes can be used. You can use silicone toe if there is a problem or there is some pressure area at the distal part. You can use silicone toe, but it has to be prescribed by a physician or healthcare physician or a physiotherapist at least. And Krishan Chawla ji, जो बहुत senior diabetes educator हैं from New Delhi, and who runs his own diabetes education program every Wednesday, 2 p.m. to 3 p.m. He is also greeting you and thanking you for all your insights. प्रशांत जी, वी अपोलोजाइज, टॉपिक तो आपका इन सिलेबस है, बट 8:15 हो गए हैं, अब भोजन की बेला है, सो मे बी वील टेक इट लेटर, हेलिक्स वेलगस। बट विद डॉक्टर संदीप सूरीज टेक होम मैसेज, जो कि है कि अपने पैरों का ख्याल रखें, उतना ही ख्याल रखें जितना अपने चेहरे का रखते हैं। ये एक सिंपल सा टेक होम, एंड डोंट डिले सीकिंग मेडिकल केयर। गो टू अ फुट स्पेशलिस्ट, गो टू अ फिजियोथेरेपिस्ट, एंड यू विल बी एबल टू एंजॉय गुड हेल्थ। इसके साथ आप सबसे इजाजत लेते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, केके मेटॉक्स इज देयर फॉर यू एवरी डे 7 to 8 p.m. एंड आई एम देयर विद यू एवरी मंडे एंड थर्सडे। इस वीरवार आपसे माफी चाहूंगा, हमारा एक रिकॉर्डेड प्रोग्राम रन करेगा ओबेसिटी पे। अगले सोमवार आपको फिर मिलता हूँ, आपकी सेवा में हाजिर होऊंगा। और इस सबसे इसके साथ आपको फिर से धन्यवाद, शुक्रिया, मेहरबानी। सब लोग जो रोजे रख रहे हैं उनको रमजान मुबारक। सब लोग जो नवरात्रि का फास्ट रख रहे हैं उनको Yes. शुभ नवरात्रि। जय हिंद। Thank you. Thank you. Thank you.